अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, we're back after a long time. आज मैं बहुत ही मजेदार as I always say, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इसको सबसे ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस होते हैं पेरेंट्स. इट्स एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन. सो मेरे साथ में सोबिया रहमान. शी इज एन अकॉम्प्लिश्ड यंग पर्सन. इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत सारे काम कर चुकी हैं. She has a bachelor's in women's studies, which is very helpful, I think, for this society, which is deprived of a lot of rights, and women especially are very deprived and very misunderstood. ये educationist bhi hai, and she is heading the daycare center. She's the director of Sofia, Dr. Sofia's daycare center, and I assume and I know that they have started also classes, proper classes, and if you have young children, मेरा सजेशन यही होगा कि आप डॉक्टर सोफिया को जरूर जरूर एक्सप्लोर करें, बिकॉज not only are these people experienced, and they have the expertise to deal with young children and how to nurture them from a young age. इन्होंने डे केयर सेंटर भी खोला हुआ था. I think 15 years. I think that I would say one of the pioneers of daycare center in Pakistan, in Karachi at least. क्योंकि डॉक्टर सोफिया वाज अ वर्किंग मदर हरसेल्फ, एंड शी अंडरस्टूड द इश्यूज, जो कि मुझे भी पता है एज अ वर्किंग मदर कितने इश्यूज होते हैं पेरेंट्स को, मदर्स को. और वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट दिस, ऑल्दो ये ऑफ टॉपिक है सोबिया से, बिकॉज ऑफ द गिल्ट दैट वर्किंग वुमेन गो थ्रू एंड हाउ द डे केयर सेंटर्स कैन प्ले अ वाइटल रोल. सो क्योंकि मैं बोल सकती हूँ बहुत ज्यादा, आई विल take it to Sobia. Sobia, thank you so much for being here. I really want to touch a lot of topics today, so we'll be talking all over. So first of all, tell me something about you and the daycare center, because that's something that is very, very interesting for mothers nowadays. Assalamu alaikum. Thank you for such a kind introduction and stuff. सो डे केयर सेंटर पाकिस्तान में जब आज से 15 साल पहले मेरी अम्मी ने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ रही थी उस वक्त, और काफ़ी ज़्यादा बैकलैश या काफ़ी ज़्यादा वो एक वॉल को हिट कर रही थी, बिकॉज आप एक मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के एकदम किसी नई जगह नए वाटर्स टेस्ट करना कि अब मैं डे केयर चलाऊंगी. बहुत से लोग पूछते थे कि डे केयर क्या होता है, डे केयर क्या होता है. तो जहाँ पे बच्चे अपने माँ अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगी तो माँ क्या करेंगी. तो इस तरह के सवालात जो हैं वो 15 साल के बाद भी आज भी हम फेस करते हैं. लेकिन we have come a long way. We have come a very long way where people are accepting our daycare centers in the city. There are more daycare centers opening in the city. There are more women working. So over the years, people have changed, but again, we still face that mentality of like, Jessica, we still face that mentality where, what is it? What is it? You know, recently we had a phone call from somewhere in Punjab, जिसने बोला कि भाई आपका ये डे केयर सेंटर है. हमने कहा जी ये डे केयर सेंटर है. तो कहते हैं वो लिटरली ये समझे थे कि ये कोई ऑर्फनेज है. और उन्होंने ऐसे बोला कि वो अपने बच्चे को हमारे पास एडमिशन कराने आ रहे हैं. तो हमने उनको एक्सप्लेन किया कि नहीं, ऑर्फनेज नहीं है. So yeah, we're still going through that. That's very interesting. जैसे कि orphanage और daycare center में कोई उनको फर्क नहीं नजर आ रहा. अच्छा, why would I want to put my child, मेरा 2 साल का 1 साल का बच्चा, किस एज से लेते हैं आप लोग, and why should I be comfortable in this day and age, जब बच्चों पे इतना abuse देख रहे हैं, violence देख रहे हैं और खतरनाक crimes भी देख रहे हैं. Why would I want to give my kids to you? I think one of the major reasons you would want to put your child in a daycare center is because statistically हम देखते हैं कि abuse जो होता है वो घर में ही होता है. ठीक है, किसी फैसिलिटी में कैमरास लगे हुए होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं, तो जब तो वहाँ पे चांसेस ऑफ अब्यूज कम होते हैं, वजह इसके कि चांसेस ऑफ अब्यूज घरों में ज्यादा होते हैं. अम्मा चली गई, नानी ने मार दिया, अम्मा चली गई, देयर आर सो मेनी इश्यूज दैट वी फेस. Secondly, I think when you are sending, हमारे यहाँ एक्सपीरियंस पे बहुत लोग काम करते हैं. हमारे यहाँ एजुकेशन कम होती है और एक्सपीरियंस आता है, which is also a good thing but also a bad thing. For example, if I'm a young mother leaving my child with let's say
well, I do leave my kids with my mom, but my mom is experienced in this, right? लेकिन कहने की बात ये कि अक्सर नानी और दादियों में भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो आजकल के जमाने के हिसाब से बच्चों को टैकल कर सकें। तो मैं इवन एज अ मॉम, मेरे बच्चे भी अभी भी मेरे सेंटर में है, मेरे डे केयर में जा रहे हैं। क्यों? ताकि मुझे पता है कि वहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग है, वहाँ पे बच्चों के हिसाब से सारी प्रोग्रामिंग चल रही है, बच्चों के हिसाब से उनको एक्टिविटीज दी जा रही है, बच्चों के हिसाब से उनको नर्चर किया जा रहा है। प्लस the environment in the daycare center is also very much like survival of the fittest also, not in a bad way but in a good way, because children are not सब अपने घर के तो प्रिंस एंड प्रिंसेसेस हैं, लेकिन डे केयर सेंटर में बहुत सारे प्रिंस एंड प्रिंसेसेस आते हैं हमारे पास। सो दैट एबिलिटी ऑफ लर्निंग सोशल स्किल्स एट अ वेरी अर्ली एज, when a child goes to a daycare, I've seen that they are becoming more smarter because they're interacting with the kids their ages, and not like in compared to a kid who's spending more time at home, let's say with nannies or grandparents or anybody their mother has chosen, वो उनकी पर्सनैलिटी में आते जाते हैं। डे केयर सेंटर या इवन प्री स्कूल्स में, डे केयर ना भी आप बोले, इवन प्री स्कूल में भी जो बच्चे जल्दी जाते हैं, वो बच्चे दे आर मोर सोशली एप्ट, if that makes sense, you know. लेकिन wouldn't it, isn't it like if I'm from a middle class or a lower middle class, I won't be sending it immediately, तो बहुत लगेगा मुझे कि भाई बहुत महंगा है, और वैसे भी डे केयर में क्या कर रहे होंगे, बच्चों को सिर्फ सुला ही रहे होंगे। दैट्स माय कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आई नो फ्रॉम डे केयर, कि बच्चा गया, वो सोया, नैनी जो भी आपने रखे हुए लोग, उन्होंने देखा और बच्चों को भेज दिया। What is different with daycares nowadays, and especially Dr. Sophia's daycare? द डिफरेंस बिटवीन, एक तो ऐसी बात नहीं होती है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि डे केयर में बच्चों को सुला देते हैं, ये बहुत स्टीरियोटिपिकल टिपिकल कॉन्सेप्ट है कि आप के बच्चों का पूरा स्केड्यूल होता है। हम पूरा स्केड्यूल बच्चों का होता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह हमारे पास बच्चा आता है, अगर 7 बजे आ रहा है तो दे डू ब्रेकफास्ट, 9 बजे उनकी क्लासेस हो जाती हैं, 1 बजे क्लासेस से ऑफ होते हैं, 1 बजे की क्लासेस के बाद वो अपना लंच करते हैं, चेंज करते हैं, फिर टीवी टाइम, नो टीवी टाइम इज एक्चुअली एट द एंड, बट लाइक देयर इज फिजिकल एक्टिविटी टाइम, देयर इज दिस टाइम, देयर इज दैट टाइम, सो it stretches out the whole day, and there's also sleep time, but we are more जैसे कि कुछ mothers कहती हैं कि please make sure that my child doesn't sleep in the daycare. Why? Because they want the child to be like, we don't want a very hyper kid at home when they're going back, so they say please make sure. So what we do, we provide them with quiet time activities, so the kid is like relaxed and not sleeping, but also understands that they have to calm their body down. So like I said, तो ये चीजें, एक तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है डे केयर का कि डे केयर में बच्चे को सुला देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमारे डे केयर में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि दे आर एक्सट्रीमली गुड प्रोफेशनल्स रनिंग अदर डे केयर्स आल्सो इन कराची, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, सो या ऐसा नहीं होता। यस, तो यानी आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, so you have teachers there, or do यस। you train your own staff to teach them? तो किस लेवल से आप पढ़ाना So चाहते हैं? so And how, sorry to cut you, how young do you take a child, and what is the age cut off when कब तक आप लेते हो, किस age तक? we start taking children at the age of 60 days to 12 years. 60 days के बच्चे बहुत रेयर आते हैं, usually we get kids by 1.5, right? Months. Because yes, the reason we see, but even earlier, and the reason for that is that there's very poor maternity leave concept in Pakistan, so mothers sometimes have to leave their kids at a very early age. जैसे इन्फेंसी में बच्चे को छोड़ना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 महीने की या साल भर की औरतों को मैटरनिटी लीव नहीं मिलती. But we've also had a mother who was a single mother, and she asked us if she could send her daughter, and she was a kid who had been with us since infancy, so that we do take we do compromise that age also. So you just talked about a single mother, and in our society we're seeing a lot of single mothers, or mothers taking care of their children. तो बच्चे अगर जब जो teenagers में होते हैं, उनका क्या करें? आपके डे केयर्स में तो नहीं आ सकते, तो do you think from your experience where should these kids go? Because हमारे यहाँ recreational भी नहीं है, और आपको पता है drug problems बहुत बढ़ रही हैं, and drugs are becoming much accessible and cheaper. तो आजकल parents, because I know it's not your daycare का उसमें नहीं आ रहा है ambit में, but as a
a young person, as a young mother, and you've been a teen whose mother was working. So where should these kids go? I think Teenagers. it's very important for teenagers and kids who are in their, reaching in their teens to have good recreational activities, whether it's at home, and even if they cannot have those recreational activities, it is very important to find local friends. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि बिकॉज हमारे स्कूल्स लोकल नहीं है, अगेन बैक टू बेसिक एजुकेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक एजुकेशन अच्छी नहीं है, यानी गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, तो हमारे यहाँ बच्चों को दूर के स्कूल्स में भेजते हैं, कोई भी स्कूल अच्छा भले से दूर हो, जिसकी वजह से हमारी जो नेबरहुड्स हैं वो अपना सेंस ऑफ कम्युनिटीज है वो अपना सेंस ऑफ नेबरहुड भूल रही हैं. सो अगेन बात सारी एजुकेशन पे आती है, लेकिन या इसका वन सोल्यूशन ये होता है कि अगर आपके बच्चे या आपके टीन्स लोकल फ्रेंड्स ढूंढें और आप भी लोकल लोगों से उन्हीं की एज के हिसाब से दोस्तियां करें, तो इट्स मच कन्वीनियंट दैट फॉर दैट एज. In our daycare, the cutoff age is 12 because again देखिए, कोई भी चीज खोलना बहुत आसान होता है, मेरी अम्मी ने डे केयर करा, कोई भी चीज खोलना बहुत आसान होता है, लेकिन राइट एजुकेशन, आई सीन सो मेनी पीपल गेट इनटू प्रोफेशंस, दे हैव नो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है उनका. हमारे यहाँ टीचिंग की जॉब के लिए लोग अप्लाई करते हैं, लड़की इंजीनियर है, राइट. सो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, मैं बहुत आराम से बोल सकती हूँ कि मैं 16 साल तक के बच्चे को ले सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि 12 से लेके 17 साल या जो भी साल तक बच्चे के मूड्स अलग होते हैं, उनकी केटर उनको अलग करना होता है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, भेज दें, और लोग भेज भी देंगे, मजबूर लोग भेज भी देंगे, लेकिन या आई डोंट थिंक इट्स राइट, बट वी शुड फोकस ऑन इट. I think आप लोग की इतना background है 15 years for daycare. So people like you may want to come up later on कि ऐसी कोई Yeah. क्या कहते हैं उनको recreational homes बना दें या कोई ऐसी चीज बना लें. I think the government should help people like you, क्योंकि बच्चे जो हैं Yeah. वो ना उनके पास खेलने की कोई जगह है, जाहिर है वो बुराई में पड़ सकते हैं. There's a lot of things that's going on. Girls and boys both घर पे होते हैं अकेले, टीनेज के बहुत ही नाजुक हम कहते हैं. तो आई थिंक इवेंचुअली वी शुड बी थिंकिंग अबाउट दैट. दूसरी चीज मैं पूछना चाह रही थी, जो कि मैं बहुत देख रही हूँ, आई हैड अ फ्यू ऑफ माय कोलीग्स हु हैड दिस इशू. उनके बच्चों को कुछ क्या कहेंगे रीडिंग डिसऑर्डर्स हैं या कोई आजकल जो ऑटिज्म समझते हैं लोग, और कभी कभार बच्चों को ऑटिज्म नहीं होता और वो उसको इस तरह गलत डायग्नोज कर देते हैं, स्कूल्स लेना नहीं चाहते. और अगर किसी बच्चे को होता है ये प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको आप नॉर्मल स्कूल में डाल देते हैं, वहां बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, पीछे रह जाता है. देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, यू नो वुड नो बेटर देन मी. इसके लिए आप कुछ सोच रहे हैं या आपने कुछ किया है? व्हाट शुड हैपन Yes, फॉर दोस चिल्ड्रन? we are trying to build our special education program, but the problem with current system of education, special education program, is that it is not very inclusive. A lot of schools, जैसे कि पाकिस्तान कराची में, उन्होंने कोशिश करने लग गए हैं कि एक रिसोर्स टीचर के साथ आप एक चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स को आप किसी टिपिकल क्लासरूम में डाल देते हैं, ठीक है. The core problem with why this is not working is because we are forgetting a very core element of this whole dynamic, which is the typical child, right? We are telling a child with special needs कि आप integrate करें, आप आइए इधर, आप इन बच्चों में फिट हो, लेकिन वो बच्चे कितने रिसेप्टिव हैं टिपिकल चाइल्ड स्पेशल नीड्स के बच्चे के साथ, कितना रिसेप्टिव है. मैं कल ही कहीं पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि द कोर ऑफ इंक्लूजन, जैसे कि इंक्लूजन की जो बात जब हम करते हैं, वो बेसिकली ये होती है कि आप जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, हमारा बच्चा किसी स्पेशल नीड्स के बच्चे को देखता है, हम कहते हैं बेटा नहीं देखो, घूरो नहीं, और हमें लगता है कि ये हमारी, we are being respectful, right? But the thing is that nobody ever says, go talk to him, go talk to that person, जाके बात करो उससे, जाके उसके साथ खेलो, ये बॉल लो, जाके खेलो उसके साथ. ये इंटीग्रेशन जब तक नहीं होगी ना, कोई भी स्पेशल नीड्स का प्रोग्राम ले आएंगे, जितने भी इवनिंग प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम, 2 घंटे के प्रोग्राम, 4 घंटे, नहीं चलेगा जब तक आप टिपिकल बच्चे को उस प्रोग्राम में ला के आप चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स को आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे. ये प्रॉब्लम है और हम इस पे काम करना चाहते हैं.
तो ये तो सोशल लेवल पे ना, सोसाइटी हैज टू चेंज. No, yes, society has to change in every way possible, right? The thing which I'm talking about मेरे अपने centers की हद तक कि आप उन बच्चों को, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को, आप हमारे डे केयर्स में हमारे पास आते हैं. हमारे पास इस वक्त ADHD, बॉर्डर लाइन ऑटिज्म, और इस हम सिर्फ एक चीज देखते हैं कि बच्चा इस वक्त अग्रेसिव नहीं है, क्या नहीं है. अगेन हम इसलिए नहीं कर सकते कि मैं देखिए ये पेरेंट्स बहुत मजबूर होते हैं. मैंने इनकी आंखों में बहुत मजबूरी अपने फर्स्ट हैंड दिखी हुई है. ये भेज देंगे, कहीं भी भेज देंगे. प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं इतनी इक्विप्ड हूँ, या क्या मेरा स्टाफ इतना इक्विप्ड है कि इसको हम कैरी कर सकते हैं. क्या ये पॉसिबल है? हमारे यहाँ अगेन माइंडसेट चेंज होना चाहिए ना. अगेन मैं अगर ये कह रही हूँ कि हमारे यहाँ एक जमाने में हम कहते थे कि हम नॉन अग्रेसिव बच्चों को नहीं लेंगे. ठीक है, अगर आपके बच्चे में कोई डिसऑर्डर है या कुछ है तो हम चेक कराएंगे. अगर नॉन, वो देखें, इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस, बट आल्सो आई फील दैट वाज रॉन्ग ऑन आवर पार्ट. अगेन लैक ऑफ एक्सपीरियंस. अग्रेसिव जब बच्चा होता है वो किसी दूसरे बच्चे को मारता है, हमें कंप्लेन आती है उस टिपिकल चाइल्ड के पेरेंट्स से. आप इन बच्चों को रख क्यों रहे डे केयर में, या आपके बच्चे मेरे बच्चे को इसके साथ क्यों बैठा रहे हैं, आप समझ रहे हैं. तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं फिर अलग कर दो, जबकि उस वक्त कर देते थे, लेकिन अब सोचते हैं कि ये बहुत गलत है. इनको उन पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, बजाय इसके कि बच्चे स्पेशल नीड के बच्चे को के पेरेंट को बुलाए. हमें इन पेरेंट को बुला के बात करनी चाहिए. मेरी बात सुने, आप नहीं चाहते कि क्या आपका बच्चा इन इंक्लूसिव हो. यू नो व्हाट आई मीन. हम बड़े बड़े स्कूल्स या हम बात करते हैं, हम बच्चों को कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाएंगे, हम बिल्कुल. मॉरल्स एंड मैनर्स सिखाएंगे. तो यही तो है मॉरल्स एंड मैनर्स, यही तो है कैरेक्टर बिल्डिंग. यू नो व्हाट आई मीन. लेकिन फिर हमारे पास टीचर्स भी नहीं है ना. द लाइक दिस पर्सन वाज टॉकिंग टू मी एंड शी वाज अ टीचर एंड शी काइंड ऑफ फाउंड दैट वो बच्चा थोड़ा सा अग्रेसिव था, थोड़ी उसको लग रहा था कि शी इज नॉट एट ऑल ट्रेन्ड फॉर दिस, बट शी कुड सी द चाइल्ड वाज डिफरेंट. उसने उसके माँ बाप से कहा कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो जाहिर है अंडरस्टैंडेबली डिनाइल में होते हैं और बहुत तकलीफ होती है एंड दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज हमारे यहाँ एक ही चीज कहा जाता है, बच्चा पागल है या आदमी पागल है या औरत. हमारे यहाँ और कोई इसका डेफिनेशन नहीं है अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम. तो उस टीचर ने कोशिश की कि देखें आप समझें कि मैं आपके बच्चे को मेरे पास तो नहीं है रिसोर्स. उसने जाके प्रिंसिपल से बात की. प्रिंसिपल हैड नो आइडिया. लाइक हाँ वो उनको पता है. So where do we get these resource teachers? Where are these teachers going to be trained? And how are we supposed to increase this and encourage schools to take resource teachers? A lot of schools are taking resource teachers, and resource teachers are available very easily. जो कराची यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे रिसोर्स टीचर्स, वहाँ पे ट्रेनिंग स्पेशल का एक पूरा डिपार्टमेंट है. वहाँ पे लोगों को डिग्रियां मिल रही हैं. प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज इतने नंबर ऑफ वास्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन जॉब्स अवेलेबल नहीं होती, या वो लोगों को ये बता नहीं सकते कि अपने प्रोग्राम को कैसे सेल करो. अगर ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना, तो अपने प्रोग्राम को कैसे तुम फैलाओगे. जैसे मैंने जब विमेन स्टडीज पढ़ रही थी तो लोग मुझसे पूछते थे कि तुम्हें खाना बनाना सिखा रहे हैं या क्या करते हैं यहाँ पे. तो मुझे, आई वॉज एन एडवोकेट फॉर माई ओन डिग्री, राइट. आई हैड टू एक्सप्लेन थिंग्स टू देम. नहीं, हमें ये नहीं सिखा रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, या हमें एक्सट्रीम नहीं सिखा. So yeah, so again, there are special education young people who are being trained in this field. Which department is this? Um, Just if it's somebody called wants special to. education. A special education department in Karachi University. I think people should explore Karachi University beyond, especially if they're going into liberal arts. I think they should explore Karachi University beyond English literature and mass communication. You know, बहुत Yeah. programs हैं और बहुत अच्छे programs हैं तो हमारे यहाँ पास से हमारी जो field में. निकल रहे हैं graduates, where are they being, are they offered jobs? To the school systems, education systems know that these people are there? I They mean, are some they schools are, but not a lot of schools, you know. a lot. Yeah. They are actually going to private firms, yeah, private organizations, yeah, private trusts, and they are working over there. Some of them are working privately, but there is not a lot of awareness कि वही बात है ना कि हमें मिलेगी कहाँ से, resource teacher हमें मिलेगा कहाँ से. Also, one of I would also like to touch base on
जब मैं कनाडा में, मेरा लिमिटेड जितना एक्सपीरियंस रहा, उस वहां पे जब मैंने एक कैनेडियन डे केयर में काम किया, उस वक्त मेरे पास अपनी अर्ली चाइल्डहुड की डिग्री नहीं थी, ठीक है। तो मैं फ्रेश, उन्होंने जॉब तो मुझे दे दी थी, और हमारी क्लास में स्पेशल नीड्स के बच्चे होते थे, ठीक है। और हम वो बच्चे हमारे साथ क्लासरूम्स में बैठ के टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है। और हफ्ते में एक दो दफा उनकी रिसोर्स टीचर आती थी और उनको हेल्प आउट करती थी, 2 घंटे 3 घंटे के लिए लेके जाते थे, उनको हेल्प आउट करते थे। लेकिन अगेन जो मुझ पे, यानी रेगुलर टीचर पे, जो हमारे पास ही वो बच्चे क्लासरूम्स में होते थे। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली इन अर्ली चाइल्डहुड, वहाँ पे रूटीन पे बहुत फोकस करते हैं। दैट मीन दैट देयर इज अ होल स्केड्यूल ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, किस टाइम पे बच्चे को बाहर लेके जाना है, किस टाइम पे बच्चे आएंगे, क्या एक्टिविटीज होंगी, सेंस, मतलब डिफरेंट प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, और वो मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं क्लासरूम्स में। तो होता ये है कि जब बच्चा रूटीन में आता है, तो चाहे वो चाइल्ड विद स्पेशल, क्योंकि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स है या टिपिकल चाइल्ड है, दे स्टार्ट फीलिंग सेफ बिकॉज दे कैन प्रिडिक्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हम बहुत आराम से, जब हम स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं ना, हम बहुत आराम से टिपिकल चाइल्ड को भूल जाते हैं। हमें अंदाजा नहीं है कि टिपिकल चाइल्ड को भी उन रूटीन्स और उन एक्सरसाइजेस की अब जरूरत है। मैं और आप एक ऐसे सिस्टम से निकले हैं, लेकिन अब हम रियलाइज करते हैं कि नहीं यार, हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस काश हमारे पास पहले होती, या काश हमारी उस वक्त, हमारे स्कूल्स में हमारी मेंटल हेल्थ को कोई फोकस करता। तो अब जो मैंने वहां पे देखा, तो बच्चों को रूटीन में डालते थे, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई एज अ टीचर इन दैट क्लासरूम। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई उन बच्चे को डील करते थे। जब अग्रेसिव होते थे तो हमारे पास टूल्स होते थे कि किस तरह काम करें बॉडी को, और वो आपको एक्सपीरियंस सिखाता है, या वो आपको, जैसे कि जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो बाहर का एक्सपीरियंस लेके आके अपने मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की अब बहुत जरूरत है, जिनके पास बाहर की मगर द एजुकेशन या प्रॉब्लम बाहर का इज एक्सपीरियंस दैट है, जैसे आपको अपने ये जो पेरेंट्स हैं, यू हैव टू फोकस ऑन देम एज वेल ना, बिकॉज पेरेंट्स अपनी फैमिली में जाके कहेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो अपने उन बच्चों को, अगर स्पेशल नीड्स हैं, या अगर बच्चा स्पेशल नीड्स का नहीं है, थोड़ा अग्रेसिव है, उसके टेम्परामेंट्स हैं उसको, या पर्सनालिटी है, हमारे हर चीज को एक ही तरह हाँका जाता है सब, या तो पागल हैं या बदतमीज हैं या व्हाटएवर लेबल। लेवल लगता है, और हम लोगों को नहीं डील करना आता। और क्योंकि हम बुजुर्गों से नहीं लेना चाहते कोई भी, सारे बुजुर्गों के एक्सपीरियंस होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ फैमिली प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। तो उन पेरेंट्स को किस तरह हम इंटीग्रेट करें, उनको कैसे एजुकेट करें, जनरल पेरेंट्स, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं बच्चों में। तो उन बच्चों को अगर ऑटिज्म है या कोई और प्रॉब्लम है, तो फौरन तारे जमीन पे कहने लगते हैं लोग, एंड दैट्स डेरोगेटरी वे टू पुट इट। क्या किया जाए? हाउ डू यू थिंक दिस? सिर्फ आप लोग नहीं कर सकते, जाहिर है आपकी एक रिसोर्सेज नहीं है इतनी। हाउ डू यू थिंक यू कैन यूज द मीडिया और द सोशल मीडिया, और हाउ कैन यू टेक दिस way beyond, you know, to other people? we are not right now, but we have this as our goal to have our own parenting workshop, online parenting workshop, offer them for free, call parents in our centers, because I feel जब हमारे पास parents orientation या PTMs में आते हैं, तो हमारी वो PTM ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं जहाँ पे हम पेरेंट्स को समझा रहे होते हैं किसी टॉपिक के बारे में। देखिए, ये भी यंग पेरेंट्स हैं, ये भी इन द 20s हैं, इनको भी कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं मिलती है कि ऐसे बच्चे पालते हैं, ठीक है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ हमारी जो PTMs होती हैं, राइट, वी हैव फाउंड positive feedbacks in the PTMs which are more workshop based in a or like session based, जहाँ पे पेरेंट्स को हम समझा रहे होते हैं, सही है। I was saying like there is no instruction manual for early parents, जैसे 20 साल के पेरेंट्स के पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं होती कि बच्चों को कैसे पालना है, तो they take more interest, even fathers attend these meetings. One of the things that I observed in my orientation was this common question कि how do we, बच्चा आ रहा है और बच्चा जो है वो, उसको रूटीन में कैसे लाएं। अब बच्चा स्कूल स्टार्ट कर रहा है, तो अब उसके लिए नया एनवायरनमेंट, अब क्या करें, किस तरह हम उसको स्कूल में लाएं। इसी तरह हमारी नंबर वन कंप्लेन जो पेरेंट्स से होती है इन आर डे केयर, वो ये होती है कि बच्चे को टाइम पे नहीं सुलाना, देयर इज नो रूटीन इन द हाउस, राइट। और जब
मैं अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ रही थी और डिसिप्लिनिंग के बारे में आया, और डिसिप्लिनिंग तो पाकिस्तानियों का एकदम नंबर 1 टॉपिक है। तो जब मैं डिसिप्लिनिंग पे आई वाज टेकिंग अ वेरी गुड इंटरेस्ट इन दैट, एंड दे सेड डिसिप्लिन इज रूटेड इन रूटीन, you know. Why is it rooted in routine? It makes so much sense. If my kid is coming up to me and she's yelling and she's doing this and I'm like, जाओ यहाँ से, अभी नहीं तंग करो, मैं शॉर्ट टर्म फिक्सेस ढूंढती हूँ, और शॉर्ट टर्म फिक्सेस के शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स होते हैं। वो चुप होके चली गई, फिर वो आ गई, सही है। रूटीन वाइज अगर आप करते हैं, बच्चों को रूटीन में डालते हैं, चाहे वो घर पे हो चाहे वो यहाँ पे हो, क्योंकि वो बच्चा सेफ फील कर रहा है, तो रूटीन में बच्चा आता जाता है, सुबह जा रहा है, शाम में आ रहा है, अब ये करना है, अब ये करना है, टाइम के हिसाब से देख रहे हैं बच्चे। बच्चे टाइम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे सारे बच्चे टाइम नहीं पढ़ना आता छोटे बच्चों को, लेकिन ये पता है कि लंच टाइम के बाद घर जाने का टाइम है, तो बच्चा बहुत आराम से रूटीन में आता है। तो या आई थिंक व्हेन इट कम्स टू So you have to पेरेंट्स, change the way of parenting and make parents and young parents and old, मतलब old से मतलब उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं कि एक तो हमारे क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, जो वर्किंग मदर्स हैं वो तो गिल्ट ट्रिप पे भी चली जाती हैं, और एक उनके मसाइल और होते हैं। सो हाउ शुड अ मदर को, जो आपके पास डे केयर में छोड़ के जा रहा है, आपका तो डे केयर आई सीन हाउ इट वर्क्स, और फिर आपकी वालदा क्योंकि डॉक्टर भी हैं, शी विल लुक आफ्टर द चाइल्ड्स हेल्थ एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक पीपल सेंडिंग चिल्ड्रन टू अ डे केयर जहाँ पर ऐसा सेटअप हो, वहां तो वो खुश होंगे। हाउ डू यू टेल इट, हाउ डू यू मेक अ मदर फील टू नॉट फील गिल्टी कि भाई मैं अपने बच्चे को छोड़ रही हूँ? हाउ वुड यू, because you have that experience, I'm sure a lot नंबर of parents do come there and talk about it. नंबर 1, I think in our daycare and anywhere, I think this should be followed, the distinction between a nanny and a mother. और ये चीज मैंने अपने ही daycare में ऑब्जर्व की है। उस तरह ऑब्जर्व की है कि जैसे कि जब मैं अपनी बच्ची को खुद से पिकअप करने जा रही थी, तो मेरी बच्ची मेरी गोद में नहीं आ रही थी, वो अपनी नैनी के पास ही थी, और एक दिन उसने अपनी नैनी को बोल दिया मामा। तो मैं तो इतनी, इवन दो आई वाज वर्किंग इन द सेम premises, सेम ऑफिस, मेरा ऑफिस ऊपर है, बच्ची मेरी, आई वाज like I got hit. Like, and that's when I realized, नहीं, मैं मामा हूँ, ये नैनी है। And again, going back to my Canadian experience, kids are kids. So there was a lady who was working with me, उसका नाम मार्गरेट था, तो उसको बहुत से बच्चे मामा बोलते थे। वो कभी भी कहती है नो, मैं मार्गरेट हूँ, मामा वो है। तो इट्स अ वर्किंग प्रोसेस। गिल्ट की जहां तक बात है, तो हम मदर्स को काउंसल करते हैं बहुत अच्छी तरह से। मदर्स आती हैं, उनको घर से कभी कभी ये सुनने को मिल जाता है, तुम्हें क्या पता अपने बच्चे के बारे में, तुम्हारा बच्चा तो डे केयर में है, तुम्हें क्या पता। बहुत इजीली मॉम शेम करते हैं हम लोग, बहुत इजीली। इवन जो बेचारी घर में भी होती है ना, उसको भी मॉम शेम बहुत आराम से कर देते हैं हम लोग। और इसीलिए हमारे यहाँ डिसिप्लिनिंग का इतना प्रेशर है। डिसिप्लिनिंग का इसलिए प्रेशर है क्योंकि मॉम शेमिंग बहुत ज्यादा है। तो हम मदर्स को काउंसिल करते हैं कि तुम इसकी बेहतरी बेहतरी के लिए काम कर रही हो, तुम अपने इकोनॉमिकल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही हो, तुम बाहर का एक्सपीरियंस लेके जब घर में आती हो, द कॉन्वर्जेशंस एट होम आर डिफरेंट, the conversation level at home, because I've lived with a working mother, so I always remember those experiences, going to a seminar with my mother, और उस वक्त तो daycare नहीं था, तो हम तो कलरिंग बुक लेके साइड पे होते थे। लेकिन वो एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं लिविंग विद अ वर्किंग मदर, और ये सिर्फ वही बच्चे जान सकते हैं जो वर्किंग मदर्स के साथ पले बड़े। तो ये मुझे एक्सप्लेन करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि आई एम नॉट सेइंग कि नॉन वर्किंग मदर्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, आई एम जस्ट सेइंग कि वर्किंग मदर्स का भी एक्सपीरियंस अच्छा होता है। हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये बेहतर है या वो बेहतर है। सब कुछ बेहतर है जो आपकी फैमिली के लिए चल रहा है, जो आपकी फैमिली के लिए सस्टेनेबल है। Okay, there are a lot of parents जो के आके टीचर से लड़ रहे होते हैं कि हमारे बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे हैं आप, ये वो। तो आई हेard a couple of teachers, I met them for a project, और वो ये कह रही थी कि हम उनसे कहते थे कि हमारे साथ तो 6-7 घंटे रहते हैं, आपके साथ भी रहते हैं, तो आपका भी एक रोल है। तो why are parents trying to put all the burden on teachers, जो कि अगर स्टे एट होम भी हैं या वर्किंग भी हैं, तो why do parents think कि पढ़ाई तरबियत सब कुछ
घर वाले नहीं करेंगे, टीचर करेगी। सो दिस इज, और अब टीचर्स को आके डांटते भी हैं। हमारे वालिदैन तो हमें कहते थे तुम्हारी टीचर तुम्हारी दुश्मन थोड़ी है। सो वी न्यू कि टीचर एक एंटिटी है जिसकी इज्जत करनी है, इससे डरना है, व्हाटएवर। हमारा तो एक अलग सोसाइटी थी। सो डू यू फेस दैट एंड हाउ डू यू थिंक वी शुड ट्रीट डील विद इट? I think when it comes to parents and them thinking कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयरिंग की जहाँ तक बात आती है, तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि ये हम समझें पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट है। ठीक है, एक इंसान, मैं आपको एक एक माइंडसेट समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उस पर बात करती हूँ, लेकिन मैं आपको ये माइंडसेट समझाना चाह रही हूँ। अगर मैं किसी चीज के मंथली, अगर मेरे दो बच्चे हैं, अगर मैं किसी चीज के 30,000 रुपए दे रही हूँ और अगर मेरे दो बच्चे हैं तो मैं 60,000 रुपए मंथली दे रही हूँ, वो मेरी इनकम का बहुत बड़ा चंक किसी प्राइवेट स्कूल को जा रहा है। तो मैं एंटाइटल्ड हूँ, मैं बोलूंगी कि मैं इतने पैसे, जैसे एक हमारा एक है ना, मैं इतने पैसे दे रहे हैं भाई। ठीक है, हम्म। बात अगेन प्राइवेट एजुकेशन किस तरह डैमेजिंग है या जो भी हम समझना चाह रहे हैं, मतलब उसकी तरफ, जहां तक शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, कि जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो हम बहुत अर्ली उनसे इस तरह की बातें करते हैं, और कि जब आप हमारे पास शिकायतें लेके आए ना, तो आप शिकायतों का टोन बदल